give a huge round of applause to Mr. Raheel Iqbal, who is the Chief Executive Officer of OZ Group of Companies. Mr. Max Sayed, the Group Chief Executive Officer of Odyssey Group of Companies. Please give a huge round of applause to Dr. Dawood, who is a serial technopreneurial founder, CEO in Telesync, CPST and co-founder, Futech Studio, and Warday, and many more. And I would also be joining this panel discussion as a host, so please let's dive into it. The ecosystem needs to be supported by the inclusion of all the key stakeholders. So my first question to all of you is that how is life after COVID? Raheel. Assalamu alaikum ji. Thank you Saira and thank you ji Khalid Saab with all the panelists. Thanks for inviting. It's always been a pleasure to be here at UMT. So COVID has changed everything. आपने देखा है कि दुनिया का पूरा एक निज़ाम बदल दिया कोविड ने. The first challenge जो हम लोगों को face करना पड़ा, that was number one. It was a big huge fear what to do. लोगों की safety, security was more important to us. Everyone has to be safe. Keeping all the workspaces COVID free was a big challenge. Work from home was a big challenge. सबसे पहले immediately we have to send everyone at home. Client आपको पता IT companies most of the हमारे जो clients बाहर बैठे होते हैं उनको अलग challenges थे, payments के challenges थे, पूरी दुनिया रुक गई थी. मतलब बैंक की remittances अगर लोग banks में नहीं जा रहे, काम नहीं हो रहे, payments रुकी हुई हैं, यहाँ हम लोगों ने salaries देनी है. वर्क स्पेसेस में एक chaotic situation थी कि जी मैनेज कैसे करें, क्या करें. So what we did, number one, we have to send everyone home. Work from home was a big challenge. लोगों की coordination का, communication का. आप लोग सुबह 9 बजे 10 बजे दफ्तर आते हैं, आते ही आप लोग मीटिंग करते हैं, काम करते हैं, क्लाइंट के साथ कॉल होती है, एजेंडा डिस्कस होता है, स्क्रम मीटिंग होती है, काम स्टार्ट हो जाता है. तो दैट वाज अ चैलेंज कि ये एक इंटरेक्टिव सेशंस को वर्क फ्रॉम होम पे कैसे बैलेंस आउट किया जाए. और वर्क फ्रॉम होम द नंबर वन चैलेंज वो क्या है, घरों पे जब काम करते हैं लोग तो एक लेथार्जिक सी फीलिंग वैसे ही सारों में आ जाती है. और मतलब जूम कॉल्स बढ़ गई, ईमेल इंटरेक्शन बढ़ गया, व्हाट्सएप की कम्युनिकेशंस बहुत बढ़ गई, कम्युनिकेशन गैप्स आना शुरू हो गए. एक नई चीज़ सीखी कि भी हम लोगों को कम्युनिकेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए अपने प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर डेवलप करने पड़े कि जिस पे एक एक कॉल की इम्पॉर्टेंट चीज़ें रिकॉर्ड हुई, रिक्वायरमेंट्स को कैसे गैदर किया, उनको रिकॉर्ड किया गया, कम्युनिकेशन को फास्ट ट्रैक किया गया. अगर एक लीड है उसने अपनी सारी टीम से बात करनी है और कोई बंदा हमारा एक दुबई में ऑफिस है, एक यूएस में है, डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम पे कैसे बैलेंस आउट करना. सो देयर वर सो मेनी चैलेंजेस कि द फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स और मैं बल्कि 2-3 महीने तो हम लोगों के इस चैलेंज में गुजर गए कि भी कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, क्लाइंट इंटरेक्शन और पेमेंट्स को कैसे मैनेज किया जाए. पेमेंट जो 30 डेज़ के साइकिल में क्लाइंट मंथ एंड पे अगर हफ्ते में पेमेंट हमारे अकाउंट्स में हिट हो जाती थी तो वो 2-2, 3-3 वीक्स की डिले होने लग गए. सो देयर वर ऑल दीज चैलेंजेस. लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि सेफ्टी वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी कि भी एवरीवन हैज़ टू गो होम, वर्क फ्रॉम होम. लोगों को घरों पे चैलेंजेस आए, स्पेशली आपको पता पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को फास्ट इंटरनेट नहीं मिलता. इवन वर्क स्पेसेस में भी हमें स्पेशली CIRs लगवाने पड़ते हैं. अब घरों में बैठ के कॉल्स लेना, इंटरनेट के चैलेंजेस, सिस्टम्स के चैलेंजेस, घर से बैठ के एक डेवलपर है, एक टीम लीड है, मैनेजर है, वो लॉग इन हुआ, ही हैज़ टू ऑलवेज बी कनेक्टेड विद द सर्वर्स जो ऑफिस में पड़े हैं और उनके साथ कनेक्टिविटी के साथ हर वक्त कॉल्स लेना और क्लाइंट को अपने एंड पे सेटिस्फाई रखना. सो ये सारे चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किए. हमने अपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया प्रोप्राइटरी उसके कम्युनिकेशन के लिए और रिकॉर्डिंग के लिए कि इसमें पूरी जूम कॉल रिकॉर्ड होती थी. उसमें इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट्स वाले उनकी कटिंग करके वो एक वर्क फ्लो में और स्लैक के थ्रू सब लोगों को कम्युनिकेट हो जाते थे कि दैट्स व्हाट हैज़ टू बी डन, ये डिसाइड हुआ इस तरह से करना है. सो ये सारे चैलेंजेस को हम लोगों ने बड़े मतलब इसको कैटर किया एंड एवरीवन वाज वेटिंग कि भाई अब किसी तरह ये कोविड वाला जो है ये ज़रा ख़त्म हो, दफ्तरों में वापस जाएं, दोबारा से उस पेस पे काम शुरू हो कि घरों में पेस बहुत कम हो गई थी. एक काम अगर कम्युनिकेशन आप लोग 10-15 स्क्रम मीटिंग करके आधे घंटे में फ़ाइनल करके उठ जाते हैं तो वो 2 to 3 टाइम्स हो रही थी क्योंकि आप जब इन पर्सन मीटिंग्स नहीं करते तो उसमें रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होती हैं.
तो उसके फॉलो अप शाम को अगर 7-8 बजे लोग फारग हो जाते थे तो 10 बजे तक भी काम नहीं ख़त्म हो रहे थे। तो फिर वैक्सीनेशन एंड एवरीथिंग के भी सारों सबको वैक्सीनेट कराया जाए पीसीआर टेस्ट के थ्रू। वर्क स्पेसिस को एवरी वीक फिर जब दोबारा से खोला तो 50% लोगों को दोबारा वर्क स्पेसिस पे बुलाया गया। बाकी लोग घरों में काम कर रहे थे, आइट्रेशंस में बुलाया गया। सो ऑल दीज चैलेंजेस अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स गुड दैट थिंग्स आर कमिंग बैक टू नॉर्मल। अब सब लोग वापस आ रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, एवरीवन इज़ वैक्सीनेटेड, एवरीवन से ट्रैवलिंग शुरू हो गई है। सो इस पूरे एरा ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत सी चेंजेस आई हैं। वी हैव लर्नड अ लॉट, वी हैव मैनेज्ड अ लॉट, लोगों की एफिशिएंसी बढ़ी है, कई चीज़ें। बल्कि हमने एक जिसमें जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया था दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि वो अब क्लाइंट्स ने ख़रीदना शुरू कर दिया। सो इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी भी थी जहाँ पे कोई एक चैलेंज आता है तो इट्स अ हिडन अपॉर्चुनिटी जो एक्सप्लोर करके कैश करनी होती है। Absolutely, absolutely. So this is where risk met the opportunities, right? Exactly. So same question to you, Max. How is your life during COVID? How was your life during COVID, and how is your life after COVID? We pretty much covered everything. I don't think there is much difference from that side. I just want to take it from a different angle. Um, just to say, like we all know historically, the innovation thrives during the time of panic, right? So industrial revolution came through the World War. 2008 credit crisis moved the companies to go to our cloud to be a cost effective. And same thing with COVID, what we noticed that the digital transformation that took like a lead factor, right? The digital transformation or the technologies we can say which comes within the boundaries of digital innovation is innovated in 1 year, otherwise it might have taken 5 years to get to the same point, right? And also, like sitting in UMT and having a discussion with you about what the students should look into their future, like, how the COVID is going to impact. And I think the biggest innovation is within an IT is a digital transformation, right? Before we used to do the virtual calls and the conference room table used to extend it into the client conference room, right? But now the conference room is extended into the client's homes as well, right? It's like a way out, branched out, right? That's the biggest factor happen. And how we have to adapt to this new normal is to adopt new sort of technology. Even our clients' needs are changed, right? So one example, like, we work very closely with a very large power generation assets, gen units. So how the gen units need to be like, because having a less number of resources on presence on site, lot of processes need to be autonomous, right? So how we can introduce more robotic automated processes. There are a lot of inclusion of machine learning. One example is that, for example, on the turbines, instead of having more like human watch, having more like like collecting the data and applying machine learning algorithms to see that if there is any abnormalities there can be detected. So the inclusion of technology, machine learning, in AI is playing the biggest part in this pandemic and is changing the workforce, right? So being upfront of like working on digital technology and where we see what the impact now and what we see the impact in coming year, I think right now the biggest challenge we are facing is finding a right talent to meet that changing need, right? There is such a high need for machine learning engineers, AI engineers, for example, Python, and all that technology, business intelligence, for example, robotic process automation. So I think in addition to what we talk about internally work issues, what externally now we see is a big shortage in a talent. We did not expect that type of digital transformation may come that earlier. So this is the biggest challenge we are seeing right now. Very rightly said.
And actually, no doubt, he discussed about the internal factors, and you very rightly touched the tangent of external factors. And apart from finding the right fit for the organization or right talent set, I guess now, specifically the tech companies are also facing the biggest dilemma of fueling the retention, right? Because now, globally, the organizations and people specifically, they are talking and thinking a lot about the work-life balance. And now this puts an extra pressure on the organizations on how to retain that talent. Um, so, Dawood, similar question to you, and I really look forward to touch another tangent, apart from internal and external. How was your experience during COVID? Assalamu alaikum UMT. Walaikum assalam. Internally or externally जो problems आती हैं while having the COVID in Pakistan, so उसमें पहला एक problem ये थी कि students को ये guide करना या जो अपने staffs को ये guide करना कि we have to fight with it, we have to survive, चाहे जैसी मर्जी condition है. So what was the challenge for us in a company? So कि हर कोई ये डरा हुआ था कि if they are going out, they are going to have a COVID. So first of all, we have to abolish the concept of COVID on all the concept कि COVID एक वबा है, बस we have to fight with it. So पहले उनको ये गाइड किया कि COVID से डरना नहीं है, we have to fight, and so we design a software for our team. That software automatically deals the blood pressure, the everything that body is going to contain. Using the blood sample, we introduced a product in the market this year that just take a blood sample from your body and it will predict every stance of the medical allergies, medical conditions, your blood pressures, your medications if you had before, and what you are going to have in future. It will predict you with the help of that blood samples. So उससे मुझे ये help हुआ कि while having a 62 staff in my office, so मैंने उनको घर पे नहीं एकदम direct भेज दिया. After 15 days, I invited him back to fight with the COVID. While sitting in office, giving them a space, whatever they like, how they are moving words. तो वो वहाँ पे बैठ के काम भी कर रहे थे और साथ साथ उस चीज़ को डिज़ाइन भी कर रहे थे, because they have, you can say कि they have an aim कि हमने कोविड से लड़ना है. Now उन्होंने वो सॉफ्टवेयर वहाँ पे डिज़ाइन किया with me, and now my software is working in different hospitals as well. While और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी प्रोडक्ट है जो within 6 hours आपको सारे symptoms के आंसर कर देगी. So you don't have to go any further कि आप कोविड के टेस्ट करवाओ या कोई और चीज़ करवाओ. With the help of just blood sample, we are going to have everything. That's great, huh? Yeah. So उसके बाद अब जब ऑफिसेस वापस आ रहे हैं सब लोग, so इनके पास अब एक और एनर्जी है. While we are going to announce something very big today in the Governor House as my event is going on, उसमें ये है कि हम एक और प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं. दैट प्रोडक्ट विल बी लाइक फॉर एनी काइंड ऑफ मेडिकल कंडीशन जिसमें ऑस्टियोप्रोसिस को सबसे ज़्यादा कंसीडर किया जा रहा है. सो समहाउ वी आर गोइंग टू अबॉलिश द ऑस्टियोप्रोसिस in Pakistan somehow, and within 5 years इंशाल्लाह ऑस्टियोप्रोसिस को पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया जाएगा in older people as well. उसके लिए जो मेडिकल टर्म्स एंड कंडीशन में जो मेडिकल इंडस्ट्री से जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हो रहे हैं उनमें ये है कि ऑस्टियोप्रोसिस स्टार्ट किस एज में होता है. सो वो हम 25 के बाद ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट कर लेंगे. एंड वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ एनी काइंड ऑफ गैमा रेज, वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ एनी काइंड ऑफ अल्ट्रावायलेट रेजेस, वी आर गोइंग टू यूज़ द साउंड एनर्जी. दैट्स इट. And the sound that the frequency of 80 megahertz, not more than that. That's all. और वही 80 megahertz की जो sound frequency होती है वो आप उसके headphones को भी यूज़ कर रहे होते हैं. And उसके थ्रू हम osteoporosis को kettle करके, tag करके और analysis कर देंगे कि when the person is going to have that osteoporosis started. So this is what COVID has done to you, huh? Yeah. And Sounds like very good news. Exactly. And this is also another great example of multidisciplinary collaboration, the way he interacted with the right individuals from the different fields, and finally he came up with an intervention of consequence, which is going to have very fruitful implications, in the industry as well. So Khalid sir, they very rightly and very thoughtfully touched the right tangents. And what I concluded from their thoughts is that
in this emerging realm of COVID, innovation and care have emerged as a new currency. Either it's about your clients, either it's about the world around you, either it's about the people around you, your family members, your employees. So, what are your thoughts on it? Oh, excellent. Innovation and care. Well said. Right. Daud is already on it, Dr. Daud, and we are feeling very proud of you being Pakistani and coming up with the intervention of consequence. Healthcare industry is going to be probably the largest industry in next 5 years. Achha, my thoughts were, you see, I was studying and researching World Economic Forum, Forbes and others. उस पे ये था कि 2025 पे ये हो जाएगा, 2030 में ये हो जाएगा, 800 million jobs will be off. 75 companies which are there today, they will be, just extinguished from the world map. And so many other parameters I was studying, and it was 2025 and 2030. COVID-20 को I see as a very big blessing actually, COVID-19 को. कि 2020 में 5 साल पहले आ गया, and it prepared us for the intervention, for the upcoming future, जहाँ पे इंसान की इंटरवेंशन से वो चीज़ें होने जा रही हैं जो पेंडेमिक के ऊपर बेस्ड नहीं थी. ये एक नेचुरल एक चैलेंज आया, उस पे इंसान ने वो कुछ कर लिया कि जो एक्चुअल चैलेंज उसको आने 5-10 साल बाद, उस चैलेंज को एड्रेस करना शुरू कर दिया. एटलीस्ट अवेयरनेस आ गई और लोगों ने काम भी शुरू कर दिया. तो आई थिंक द ट्रांजिशन टू 2030 विल नॉट बी दैट बम्पी एज इट वॉज इनिशियली थॉट. कोविड-19 का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये ज़रूर मुझे नज़र आता है कि वी आर गोइंग टू स्मूथली सेल इनटू इट और सीमलेस ट्रांजिशन टाइप चीज़ हो जाएगी. देयर विल बी सम जर्क्स बट मैनेजेबल. तो आई थिंक डॉक्टर दाऊद ने एंड मैक्स ने एंड Rahil also shared with us the way they countered this challenge, and they all emerged as winners. And mashallah, इनका growth chart तो बहुत ही ऊपर चला गया during COVID. Yeah. So I think congratulations to them कि they have that winning instinct कि if you put your brains to work, you can find solution to any problem. Absolutely. In fact, carrying forward your point which you discussed, my next question is exactly on the same lines, which is that if you encounter any such similar situation of COVID or some other kind of thing in the future, do you have the right strategies or some steps that you would like to take to encounter any such similar situation in future? Or to avoid it. Or to avoid proactively. it. The way you have emerged a winner like this, so how you gonna emerge in a situation if it is gonna happen like this again? देखें सारा वेरी गुड क्वेश्चन. अब देखें कोविड ने हमें सिखाया ही है सारा कुछ कि भी एक आप प्रिपेयर्ड नहीं थे किसी चीज़ के लिए एंड लाइक सडनली विद इन 1 week नोटिस ऑल ऑफ यू हैव टू गो होम. आप सब लोगों ने घरों में जाना है, वहाँ पे क्वारंटीन करना है या बचना है और वहाँ से बैठ के काम करना है. सो नो वन वॉज रेडी फॉर दैट एंड नो वन वॉज रेडी टू टेक अप ऑल द चैलेंजेस दैट वी फेस्ड. वो सारों ने फेस किए हैं वो चैलेंजेस. और होता ये है कि बेसिकली एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन ये होती है कि बेसिकली सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स केम आउट ड्यूरिंग द कोविड, सो मेनी स्टार्टअप, सो मेनी कंपनीज, सो मेनी आइडियाज़ फ्लरिश्ड. सबसे ज़्यादा भी देखेंगे लास्ट 6 months में $30 million की इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में ऑल द स्टार्टअप्स, मतलब स्पेशली फिनटेक स्टार्टअप्स, एडटेक एंड हेल्थ केयर स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा एक डिसरप्टिव वे से फंडिंग आई है. एंड पीपल आर एंड सिलिकॉन वैली इज़ नाउ एक्चुअली लुकिंग आफ्टर कि यार पाकिस्तान में वाकई एक डिसरप्शन हुई है. सो होता ये है कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योरियल नेचर आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. यू आर नॉट रेडी फॉर द चैलेंज बट चैलेंज आ गया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट थिंक पॉजिटिव, फाइंड आउट कि यार इस चैलेंज में भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है. फ्यूचर में जो भी डिसरप्शंस आ रही हैं, जो भी चेंजेस आ रही हैं, ऑब्वियसली प्रेडिक्शन एंड प्रोएक्टिव अप्रोच, आप प्रोएक्टिव अप्रोच तो लेते ही हैं. प्रेडिक्शन आप एग्जैक्टली नहीं कर सकते क्या होगा कैसे होगा, बट बीइंग मोर प्रोएक्टिव एंड कंसोलिडेटिंग ऑन द डेटा. जो भी डेटा आज आपके पास है, जो भी आपके पास क्वार्टरली आप देखते हैं क्या चेंजेस ही आ रही हैं. अब दुनिया में ये ऐसे होने लग गया, अब ये हो रहा है. देयर आर न्यू वेज टू गेट पेमेंट्स, देयर आर न्यू वेज टू पे आउट, देयर आर न्यू वेज टू हायर पीपल एनीवेयर, देयर आर न्यू वेज कि आप रिमोटली कैसे काम कर सकते हैं.
इन सारे चैलेंजेस को देखते हुए, इन सारे डिस्ट्रप्शंस को देखते हुए, आप डेटे के ऊपर आप अपने पिछले 5 साल का डेटा देखें, थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। 1,000 लोगों की कंपनी हम पहले एक डिफरेंट तरीके से मैनेज कर रहे थे, अब बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैनेज कर रहे हैं। वी हैव फाउंड आउट न्यू वेज कि यार हमने टैलेंट अगला हंट कैसे करना है, एक्वायर कैसे करना है। हमने ना सिर्फ पाकिस्तान में बैठे हुए, हमने अगर यहाँ से बैठे बैठे किसी को भेजे बगैर यूक्रेन में एक टीम डेवलप करनी है तो यहाँ से कैसे करनी है। सो वी हैव फाउंड आउट न्यू वेज, और यही आप हमने अपना पिछले 5 साल का डाटा देखा, 10 साल का डाटा देखा, और हमने देखा कि उसमें इतनी डिसरप्शन थी जो पिछले 1 साल या 2 साल में आई हैं, और उसी को देखते हुए हमने देखा कि आगे क्या चेंजेस आएंगी। तो यू कैन मेक प्रोएक्टिव मेजर्स और रेडी फॉर एनी चैलेंजेस। सो द थिंग इज़, इफ़ यू हैव अ गुड टीम, इफ़ यू हैव अ प्रोएक्टिव अप्रोच, सो आप आने वाली चीज़ों को प्रिडिक्ट बेशक बहुत अच्छे तरीके से ना कर सकें, लेकिन व्हेन चेंजेस हैपन आप उसमें अपने आप को अडॉप्ट करके, अपने प्रोसेसेस को, अपने रूटीन्स को चेंज करके उसको टेकअप कर लेते हैं, उसको कवर कर लेते हैं। एंड दैट्स द डेफिनेशन ऑफ अ ट्रू एंटरप्रेन्योर इज़ के एन एंटरप्रेन्योर टेक्स अ जंप, वो छलांग लगा देता है और बाद में फिगर आउट करना है कि अब उसने वाइल This is called agile way of doing things. वाइल डाइविंग के अब उसने बिल्ड करके अपने आप को बचना कैसे है। तो ये दैट्स द सेम थिंग। Very nice. Max, what are your thoughts? Have Odyssey Solutions, Odyssey Group, has devised any specific strategies to counter any such pandemic situations in I future? would add to it कि उस पे the energy sector में how you foresee, Yeah. and what are your thoughts on it? This was the most globally impact pandemic, and surely I was born way after Spanish flu, right? So it was like shock, not for few, it was shock for all of us. When there was a real realization hit about the COVID, I was in US at that time, and I was sitting with the CIO of one of the largest power generation in US. They have like 40 plus power generation assets. They have nuclear plants, hydro, coal, everything, you name it, right? And the leaders need to be ready always to face what's come on their way. And you're right about a very, I don't think in schools ever taught before about agile strategy, right? Maybe it's a time to learn about agile strategy, right? So I see the panic, literally. I see the panic on the face in the boardroom, like what to do next, right? Because, COVID can have different impacts, but what can happen if there's a labor shortage and people are not able to run the power generation, right? It can be an energy crisis. And that was the biggest issue to manage, right? There was no past history, there was no experience how to manage. If we look at the network which supplies the crude oil or the natural gas, power, renewable, it requires the continuous human interference and monitoring, right? How are we going to be adapting to that system when there is no physical presence of that? And I think that's where the human factor comes in. We always survive and strive through bad times and we figure out something. And I will accept that initially it was like, I don't know, use the word chaos, but I will say there were a lot of uncertainty in the beginning, like how we going to keep these transmission lines and how we keep the lights on and not get, the panic factor creeping in. But then just like you said, agile strategy, is not a question of what I'm going to do in next 5 years. It was really a question to the leadership, how I'm going to pass today and how I'm going to survive to tomorrow, right? So it's a very macro level changes and strategy was involved, which really helped to keep, because the other biggest thing is that how to retrain your staff doing the work in a different way, right? And another biggest impact was on the firm organizational culture, right? People were used to do things in a certain way, and now they're not able to do it in the same way, right? The teamwork is not, especially the people that are on the ground, right? They spend their lives working on a turbine, for example, right? And they are used to do the things in the same way. And literally, even in developed countries, some of these people are not literate even to use a computer, right? And now they have to go and remotely monitor and conduct the way they're doing it, right? So
I think it was a great lesson learned. I hope in academia, especially in the management classes, this topic or these courses will be introduced, that how to build an agile strategy thinking, like strategy is different from a goal, right? So it's not a question what I'm going to accomplish, but this is a question that how I'm going to be a world which is changing on every day, how I'm going to draw paths to get to my goal. That was the biggest challenge. I was just reading an article, and it says that the days of making business plans are gone. Today, you have to make vulnerability management strategic plans, and that should be your business plan, because future is so uncertain. And even the chairman of Microsoft was also on Twitter saying that I have interacted with so many HR guys all over America, and we all are convinced on one point that we don't know what's going to be like tomorrow. All right. So when you have to weather the storm or feather into uncertainty zone where you are not very sure about what will come up next, that's where the real mental agility, your alignment of mental thoughts, quick realignment. And for that, I was thinking, what could be the way of achieving this agility so that you have the right team and everything in place in the time of need. So basically, what we are referring to is transformation. And probably the biggest role of any business head or a team leader is to have a team which has that transformative, outlook, attitude, and they have to be groomed at the early stage now. We can't wait for 20 years for somebody to take experience and then come to a stage where they can really contribute something. You have to start right from the word go. This is a new reality and a new normal. So Khalid साहब ऐसे ही है कि basically the thing that you have said, that's the bottom line. No business plan is the next plan. So things happen. देखिए sometimes what happens कि हमारे कराची office में thing happened कि they suddenly came and sealed the office. And अभी pandemic की सिर्फ बातें हो रही थी. It was like 12th and 13th March, and there was more panic in Karachi because सबसे पहला case उधर गवादर वाली side पे निकला था. It was spreading out in Sindh. So they just sealed the whole building, and main शाहराह फैसल के ऊपर पूरी building seal हो गई है, and no one can go to the office. So that was a challenge that we have to face for the first time कि अब क्या कर सकते हैं. So they allowed कि just two people can go inside step by step, सारी computers, laptops बाहर निकाले, लोगों को घरों पे facilitate किया. It was a challenge कि overnight, within 12 to 24 hours, हम वापस operational कैसे जाएं. So you have to be dynamic. And you were connected internationally, right? Your clients overseas. Clients overseas, and here we had we cannot afford that. We had no empathy with your clients, with your company, with your team. And this is a cultural challenge also, because the emerging future needs to have a different set of empathy in place. You can't be very administrative now. And that was a time when a hidden opportunity came out. So we have a communication app, Teletalk. It's a Pakistan's first like WhatsApp sort of chat application, and we have calls and everything on that. So all internally we started using Teletalk at that time for all our business communications recording. We have a desktop version, we have mobile app version, we have communication. So हमने उस एक साल में पूरी वो हमारी Teletalk transform हो गई थी. And we had so many traffic on that. हमारा अपना server है, उसके back end पे सारी calls को record monitor कर लेंगे, जैसा कि पाकिस्तानी WhatsApp. So that came an opportunity कि यार fast communication के लिए what is the way कि हमारी अपनी proprietary एक ऐप हो जो कि desktop based हो, जो कि मोबाइल पे चलते फिरते कहीं भी बैठ के कोई भी बंदा कॉल ले सकता है, उस पर अपने नोट्स नोट करके टीम वर्क पे टीम पे लोगों को उसमें डिफरेंट ग्रुप्स में कम्युनिकेट कर दें. सो दैट वाज अ हिडन अपॉर्चुनिटी कि एक हमारी एक ऐप पड़ी हुई थी जो कि उस वक्त बिकेम अ बैकबोन फॉर आवर ऑल द बिजनेस कम्युनिकेशन एंड आवर ऑल द कंडक्शन ऑफ द बिजनेस. एनर्जी सेक्टर में आपने देखा है अभी बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बल्कि आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर्स इन जोल्टा इलेक्ट्रिक, जो कि पाकिस्तान की पहली लाइसेंस इलेक्ट्रिक बाइक है. सो आप देखें, इट्स द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन. थैंक यू जी. सो it's inaugurated by Prime Minister इमरान खान, और ये पाकिस्तान की ओनली फर्स्ट लाइसेंस इलेक्ट्रिक बाइक है. और ये एक नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है कि हम लोग अब फ्यूल और नॉइज़ से हट के एक ऐसी व्हीकल्स पे जा रहे हैं
कि जिसमें ना कोई इसमें कोई कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं है, कोई चेन नहीं है, नथिंग, जस्ट आपने चार्ज करनी है, 1 यूनिट में ये चार्ज होती है और आपको 60-70 किलोमीटर्स सीमलेसली आपको देती है। दिस इज़ द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह एनर्जी सेक्टर में अगली आने वाली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस हैं। बैटरीज़ के ऊपर आपके इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स आपकी घरों की आधी रिक्वायरमेंट्स ये लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज से पूरी आपकी जो है ना वो पूरी हो जाएगी। सो इट्स अ नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग अप। तो इन चीज़ों के लिए हमें रेडी रहना चाहिए और विदाउट हैविंग अ बिजनेस Yeah. प्लान जस्ट जंप्ड इन एंड लेट्स डू इट। Yeah. So I guess, no doubt, COVID was a wake-up call, to all of us to reinvent ourselves and envision, the unimaginable. And definitely, it also opened a new window of opportunities, for a lot of stakeholders. And that's why now the concept of chief reinvention officer has, been promoted a lot in the organizations, and now definitely they will be taking it a lot more seriously. Dawood, we have been also reading, the research is published by the World Economic Forum, and a lot of emerging disruptions have been, published by them, which are expected in the future, including, engineering better aging, houses built with local materials, space met globe, right? A lot of other disruptions. So, what kind of future disruptions are expected specifically in your field? स्पेशली जो फ्यूचर है वो तो अनप्रिडिक्टेबल है, बट वी कैन प्रिडिक्ट सम हाउ टू सम एक्सटेंट। उसमें जैसे सर रहील ने बात की कि स्टैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द डेटा वी हैव, क्योंकि अगर हम आज रेडी हैं देन हम कल के लिए भी रेडी रहेंगे, बट वी हैव टू फेस सम कॉन्सिक्वेंसेज इन द फ्यूचर एज वेल। But the thing is, while having the AI technology all around the world and the emerging technology, somehow the humanity is gone. Somehow you can say the humanities never existed anymore. While you see the hospitals all around the world, the people don't even think about the humanity. They just think about the money they're going to have with that technology. So my opinion is the future will be disaster if we are not going to control the economy, the data that we have. Somehow the data can be manipulated. Like the Sir Max already working on the machine learning models. So the machine learning is the only way to manipulate the data that we have, and the Google also initiate another thing that is deepfake faces. The people never came to this world, but they have their bank accounts, they have their data, they have their Facebook accounts, they can communicate with you while they are having an AI chatbots. So the AI chatbots will gonna abolish every community all around the world. And like Sarahil said about the batteries and the technology, yes, we are moving towards the latest tech. And the fact is, now we need to uh, tell students like this technology will help them to grow in the future while they are sitting idle at their homes and searching about the Facebook new techniques. They have to invest their time on the latest technology. They are learning models. अब मशीन लर्निंग में मॉडल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हम मशीन लर्निंग के मॉडल्स को मैनिपुलेट करते हैं डेटा निकालने के लिए। अब वो डेटा निकल आया, लाइक वी हैड अ गेम and we designed it on Hyperwallet. Hyperwallet is another currency for the PayPal, and it's sort of a Bitcoin, you can say. हमने जब Hyperwallet को एक गेम के साथ कनेक्ट किया, you can't even imagine, in just one day we got 1 million audience over it. Wow. And so that was the fact. The people are playing games and they are not even thinking what we are earning. So we have to tell them every single game with the wallet or coins, they are working on AI. They are actually predicting your behavior. And one of the biggest example that we are having today is PUBG. The PUBG is the only game designed with AI. When it came, it was only 7 MB. Right now, it takes 15 GB of your spaces. Oh. So PUBG is playing a role in a market. Like how? अगर हम किसी बच्चे को कहते हैं कि आप ये पढ़ लो, ये सीख लो, they are playing with the PUBG game. अब पाकिस्तान में ये हो रहा है, while in China there is nothing like a game over there.
In Japan, there is nothing like a game over there. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी देनी है. अगर हम ये बात करते हैं अमेरिका, चाइना, जापान, एवरीवेयर द टेक्नोलॉजी इज ओवर देयर, लैब्स हैं. सर रहील इकबाल का एक इनिशिएटिव है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि आई यूज़ टू वर्क विद हिम एज वेल. इन्होंने गेमिंग इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ी रेवोल्यूशन लेके आए वो था माइंड स्ट्रैटेजी, द स्ट्रैटेजिक गेम्स. अब वो स्ट्रैटेजिक गेम अगर हम किसी बच्चे को खेलने के लिए कहेंगे ना, वो थोड़ा पहले कंफ्यूज होगा, बट ही इज़ लर्निंग हाउ टू फाइट इन अ फ्यूचर. हमारे पास इस तरह की गेमिंग इंडस्ट्री एक या दो हैं. एंड मुझे सर रहील इकबाल की 4-5 ऐसे गेम्स हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं, जिसका मैं भी फ़ैन हूँ टू बी ऑनेस्ट. उनमें वो गेम्स के अंदर स्ट्रैटेजीज हैं. endorsements, man. Thank you, ji. Thank you very much. उनमें स्ट्रैटेजीज हैं, लाइक हाउ यू गोना प्ले विद द गेम. फर्स्ट यू हैव टू थिंक देन यू प्ले. अगर हम वो गेम्स लें बिसाइड द पबजी एंड फ्री फायर में क्या है, आपकी एक टीम है, वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज द कंपटीशन. उससे हो क्या रहा है, वी आर वेस्टिंग द टाइम एंड मनी एज वेल. We were discussing with Daud, तो हम एक गेम देख रहे थे कि कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इफ़ेक्टिवली अपने बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वहाँ पे एक गेम दी जाती है स्टूडेंट्स को कि विद अ पोर्टफोलियो कि भी इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतनी फंडिंग है, और उस गेम पे दे हैव टू बिल्ड एन एम्पायर यूजिंग द करंट उनको जितने भी कॉइन्स दिए जाते हैं. सो वो अब देखने कि गेमिफिकेशन इज़ बिकमिंग टू एन एक्सटेंट कि स्ट्रेटेजिक लर्निंग एंड मोर कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग गेमिफाइड एक्सपीरियंस से ज़्यादा अच्छे लिए जाते हैं रादर देन कि आप उन केस स्टडीज़ को बुक्स में ही पढ़ते रहें. तो वो हमने एक्सपीरियंसेस अपनी उन गेम्स के अंदर इनकॉर्पोरेट किए थे. That's excellent. Actually, we had a detailed session with Max, and he has a very different entrepreneurial mindset, which I read, because he goes for multidisciplinary collaboration. The last meeting we had with him was about biotech and data science. अच्छा, मेरा अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है, हम लोग कुछ उसके ऊपर वी आर ट्राइंग टू डिस्कस फ्यू थिंग्स कि था कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, वी आर मूविंग टूवर्ड्स बायो इन्फोटेक, राइट. नाउ टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम यू, डेटा इज अ न्यू गोल्ड वी हैव बीन हियरिंग, बट व्हाट डज इट मीन. माय डॉटर वर्क्स फॉर अ कैटलॉगिंग कंपनी इन कैलिफोर्निया जो डेटा की कैटलॉगिंग करते हैं एलेशन के नाम से. आई वाज आस्किंग हर कि तुम लोग कर क्या रहे हो, व्हाई यू नीड टू कैटलॉग. कहती है कि देयर इज सो मच डेटा गेटिंग जनरेटेड ऑन एवरी सेकेंड कि कंपनीज हैव लॉस्ट इट एक्चुअली. And now we are, doing all the cataloging and सारा कुछ. अच्छा, what is happening is जिसको मैं बोलता हूँ कि invisible cage of the future. एक हम पढ़ते थे invisible hand economics में कि demand and supply and there is an invisible hand, because this gamification and everything, they are taking your mindset, they are mapping you as a human being. And lot of data is getting generated. क्या देखते हो, क्या impulse आता है, क्या emotions है, body temperature कहाँ जाता है, and उससे बहुत सारा data generate हो रहा है. फिर different variables हैं, you need machine learning solutions to, even for data visualization you need that, right? इतना generate है. Exactly. तो moving forward उससे जो interventions हैं वो create हो रही हैं, लोग कर रहे हैं. जो मैं challenge देखता हूँ जिसपे I'll be working very closely with Max, वो ये है, and I would love to have Dr. Daud on that and Rahil also on that board. We need to create a strategic team, A mini think tank. A mini think tank. तो उसमें the way forward जो मैं देखता हूँ वो ये है कि जो invisible cage हमारे इर्द गिर्द create होने लगा है, हो गया actually. It's not visible, but हमारी बिहेवियर हर चीज़ की वो कोई ना कोई डायरेक्शन दे रहा है, और उस बेसिस पे दे रहा है जो डाटा हमने उसको दे दिया हुआ है, राइट. एंड वी ऑल नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो उसको हमने डिटॉक्स कैसे करना है फॉर योर सिस्टम. दिस इज़ द गेम आई वांट टू कम अप विद. और मैक्स के साथ जो बहुत अच्छा मुझे एक लग रहा है कि हम डेटा साइंस एंड बायोटेक को मर्ज करके विल बी वर्किंग ऑन फ्यू थिंग्स. तो उसमें आई लाइक टू इन्वाइट यू गाइज ऑल्सो कि डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर हमने जानना ऑफ दिस इनविजिबल केज. इंसान आज़ाद कभी भी नहीं था. नेग्रो को आपको फिजिकली केज नज़र आता था, अभी फिजिकली नज़र नहीं आ रहा, बट वी आर ऑल केज्ड. सर, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो आप इनविजिबल केज की बात कर रहे हैं. आई ऑलरेडी वर्कड ऑन इट. इसमें एक एल्गोरिथम है दैट इज़ capsule neural network. So if you are going to deploy that algorithm in our cell phones and the data,
we can easily manipulate them. We are not going to have anything else. अगर हम कैप्सूल को प्रॉपरली डिप्लॉय कर दें हर जगह पे, इवन जिटर्स के अंदर डिप्लॉय कर दें कि जब भी हमारा डेटा सिंक्रोनाइज हो रहा है तो वो डेटा आगे मैनिपुलेट ऑटोमेटिकली होके चला जाए, डिसरप्ट कर दे उसको automatically. This algorithm with the help of mod 26, mod 26 is also another encryption algorithm. अगर हम ये चीज़ें करके डिप्लॉय कर दें इन algorithms को jitters पे या किसी भी routing frequency पे, so we can easily manipulate them. That's a great news. So this is where देखो intellectual powerhouse चाहिए to fight with the disruptions, to prepare for it. And वो आप ही लोगों से आएगा who have seen it all, done it all, went through all the crises, came back, and then came back with a much better interventions जो future ready हैं. बहुत सारी बातें हैं जैसे आपका, राहिल्स का and Max का, Max I think has a bigger challenge because he has to deal with lot of physical assets. Yeah. And like turbines, you have to be there on dams, or if it is thermal or alternate, whatever it is, you still need physical man hours. Yeah. These guys also need them, but they need those physical man hours with a different mindset. You need physical man himself Yeah, first. yeah. So how you foresee what's going to disrupt your industry, whereby the Yeah. man is removed from Yeah. the screen? So I think the biggest thing in this one is a drone technology now. Like, for example, turbines, right? Instead of sitting someone like we call pi data, there are sensors which are picking up every second of data. Now fly drones, and the drones pick up the vibrations from the turbine, the temperature, all different multiple factors, collect the data, pass it on back, and then machines analyze the data, and they predict on the reliability. Same thing like, ramping up, ramping down of the generation asset. In case of renewable energy, there is a data collected in milliseconds from the wings on the wind direction, wind speed, moisture, humidity, all these factors, right? So instead of having someone sitting in the back office and operating the speed or the direction of the windmill, is being handed over to the machine learning algorithm, right? So just like you said, right, the human factor is more, I will not say human factor is vanishing, but human factor is becoming more intelligent and smart, and what we call now augmented data science, right? So this is a factor where the augmented data science is that where we can, maybe I should use the word at par. We bring machine at par at the same level where we are thinking. And the augmented is that where machine can think better than us, right? It can make a quicker decision than we can make. That's being introduced. I just want to say that, this is my apology, I have a meeting, I know my VP is looking at me to go. So I really want to thank you, UMT, for giving me this chance. I'm looking forward to come back again. My message to you and academia, I think all of us, including you and you, we under these changing circumstances and the landscape, we will be heavily dependent on academia, right? And we are really hoping that you will be making adjustment into your programs and courses, and you are bringing out a talent which is needed now, right? We don't need, and I will be very open about that, we don't need, for example, someone knowing a traditional data warehouse, right? We don't need someone with .NET technology, right? We need someone who's familiar with a machine. It doesn't need to be a machine learning engineer, right? But what goes into the machine learning, where the AI come in. Another biggest factor is the business intelligence, right? How business intelligence like we call monetizing the data, right? Or just like, you said the lost data, we call dark data, right? How to get these things out, how we can use the mental brain innovations, be a part of us, right? We should not be scared of this change, right? We want this to be machines working next to us. And that can only be possible if the academia can bring us this talent, right? Right now, we are facing a biggest challenge. I think Pakistan is third or fourth. Maybe you guys know about outsourcing right now, right? Is one of the top now. One of the top outsourcing, yeah. Top, right? Definitely right. Yeah. But and the other thing I'm very proud of, I came back to Pakistan after 40 years, right? And before I was working a lot
I'm not saying anything against what any country, right? But I was working a lot. I have a big firm, big presence in India. But I see like the talent from Pakistan in communication is way more better and advanced and more hardworking than the outsourcing from other countries, which is a really, impressive and proud to be offering our resources to outside world. But I think the only problem right now is a shortage to find the right resources, right? I would request 5 more minutes of yours because sure. this panel was designed in a way that we have to get to some point. We are Yeah. just driving it. Yeah. Sarah, do you have some questions or should I go towards the... Okay, you ask for the last question and then I will give the conclusive remarks. All right, fine, great. Acha, abhi, because we are talking about COVID-0 landscape and it is mainly based around technology. Pakistan has come up with special technology zones and it's in the process and they are looking at doing something great which can take Pakistan out of poverty and can manage our problems. Acha, usme, they have taken a lot of initiatives, they are moving in some direction. My simple question before you go, जो अभी हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा change आया and we should have the ability to smell the winds of change कि Facebook metaverse हो गया, right? And then I was telling कि जो उसके ऊपर फिर real estate बेचना शुरू हो गई, उसकी क्या bids आ रही हैं and all that stuff, crazy numbers. Yeah. And then what is happening, eventually the direction is कि कोविड से जो चीज़ जनरेट हुई डिजिटल वेब बन गया. इस डिजिटल वेब में अब हम फिजिकली तो नहीं बैठ सक रहे, जूम पे उस पे तो लेट्स मेक अ कॉमन वर्क स्पेस जहाँ पे हमारा एवटार somebody like us or maybe हमारी अपनी तस्वीर is there and global headquarter will be placed in metaverse and you're operating from your home but on the metaverse you are sitting on the same table. जो behavior मेरा यहाँ पे is being picked up वह रिफ्लेक्ट हो रहा है मेरे उस पे and this is where the world is moving. So do you think we are ready to challenge that sort of technology or not to challenge but to prepare ourselves, and if yes, how much time and investment in your view we need and what, because you see outsourcing is a very good thing from one standpoint that skills get transferred to your country, otherwise you are basically exporting man hours. राइट इडियट आने के बजाय आप कोड करके एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, नो ब्रेनर प्रोडक्ट यू आर नॉट मेकिंग. तो अभी दुनिया जो टेक वर्ल्ड पे जा रही है वहाँ पे इफ़ यू रियली वांट टू गेट आउट ऑफ मिजरीज तो यू नीड टू हैव प्रोडक्ट्स. अभी हम सबसर्विएंट ही हैं. नाउ माय क्वेश्चन कम्स नाउ फॉर योर कमेंट. वेस्ट में एक डेमोग्राफिक प्रोफाइल है जो डिक्लाइनिंग है, नेगेटिव ग्रोथ रेट है, एंड दे हैव लॉट ऑफ स्टेनस वर्क टू डू. And then they try to digitize and machine learning and AI की तरफ जाके अपना सारा काम वहाँ डाल दो. अच्छा, ताकि जो रेशो है that is कि किसी भी जनरेशन को चलाने के लिए it's 1:2.1, उनका 1 भी नहीं है, हमारा तो ज़बरदस्त है. अच्छा, तो now what happens कि अगर वो AI उनकी मजबूरी है and AI will become part of their life, robots will be sleeping with them probably. हमारा चक्कर ये है कि वी हैव ह्यूज बल्ज ऑफ यूथ जिसको हम अपना एक डिविडेंड भी डिक्लेयर करते हैं, जनरेशनल डेमोग्राफिक डिविडेंड. एंड नाउ ये डिपेंडेंट है इन एक्सपोर्टिंग मैन आवर्स. वो एआई पे चले गए, राइट? तो ईदर वी विल बिकम सबसर्विएंट टू देम और अनलेस वी वर्क ऑन bringing the technology here, investing heavily, and then taking our academia to become source of feed for the industry. But then we need entrepreneurs who are willing to take all those challenges, we are willing to put in money and move forward. I just need your thoughts. Up to general comment de dein, because I had to cut my questions. I need a global answer from you. Thank you. So it's a very good question, right? It's a good commentary. Basically, if we look at the underdeveloped countries, are always at an advantage than our developed countries in technology adoption, right? The major reason is that the developed countries already has an old infrastructure, old way of doing things, and they have to spend a lot to modify and change and retrain the labor, right? Underdeveloped countries, because they start from zero, right?
they don't have anything like, for example, laying out a fiber optics in Pakistan is easier than laying out in Texas, right? Because in Pakistan they don't have. Let's start with the fiber optics, right? So right now, what's happening in comparison to our developed countries to underdeveloped countries? A simple scenario I can give you. Like right now, the biggest issue in U.S. is to how to find a job for a truck driver, right? Because trucking is a very big business there. Why we need to find a job for a truck driver? Because Tesla, and like you talk about electric scooter, right? Companies are coming up with auto-driven trucks, right? There is a less need, will be a less need for drivers, right? So they are encountering an issue how to retrain an old workforce, which is a majority of the part is already there, how to retrain and how to, just like what happened in Pennsylvania after the coal, right? The emission controls, right? It become chaos over there, right? Versus in Pakistan, we are blessed because we have a younger generation, right? And I'm actually very impressed by seeing UMT. It was a big gap for me to come back in Pakistan and see any school, and I'm really impressed. The talent coming out. We have a student from FAS, we have LUMS, we have Lahore School of Economics, I believe, Namal, right? We have few other places. So the thing is that because of the youth ratio we have, because of it's so easier for you guys, and I'm just making a statement on your behalf, and I'm very impressed the way you gave me some ideas. Sound like to me, you guys are very agile. You can go in and introduce new technology, new courses, new way of education. And these countries, the underdeveloped countries, will become a hub. Like, we have a product we're bringing in, it's called YHAT. Basically, it's a product to bring very complex data science for my grandmother even, right? Anyone can use, build a machine learning model, data pie without doing anything, right? And it's built in Pakistan, right? So we already got offer for seed money from US that, hey, you guys can go and build this, bring students from, academia and in Pakistan. They ask us to go to like Malaysia, for example. So I think what this pandemic brought a big economic advantage for underdeveloped countries, right? Especially the countries like Pakistan, where I see around all the youth, very energetic and eager, right, to learn something and do something. Like, this young PhD is making a changes, So that's the thing we are looking for. Yeah. Thank you so much, guys. So sorry about that. Thank you, Max. We'll stay connected and we'll continue from here. There are other things we need to discuss. So we understand your challenges. खालिद साहब ने डिसरप्टिव जो नेक्स्ट Yeah. डिसरप्शन दुनिया में आ रही है ना, जो हमने इवन गेमिफिकेशन में देखी है Yeah. कि इनिशियली देयर वर pay to play games. You have to buy CDs, you have to buy hardware, then you have to pay for that, and then you were playing and being entertained. Then there came free to play. Like you need a cell phone and that's it, then just download and free to play. And then you can watch ads, you can buy coins, you can sell coins, and where the things were being monetized. And now the next disruption coming is pay to play. So now people will be playing games and then they will be earning a lot of coins. They will be earning bitcoins, they will be earning ethereums, they will be earning money. They will be trading between each other. There are a lot of trades, and then those games will be placed on the metaverse. Yeah. Like right now, people are buying lands like crazily on Sandbox. Look, the prices where they're scaling up. Everyone's looking for a spot in there, and then to put all the ideas there, and then the people are playing games within the metaverse. So things are changing. अब जो चीज़ें हम movies में देखते थे वो अब हमें नज़र आ रही कि भाई वाकई reality में हो जाएंगी कि आप actually It's all work of one so you'll be having science your own fiction surrogates. writer. Yeah. You'll be having your own surrogates. Actually आपने अपना कोई रेप्लिका बना के अपनी उस मेटावर्स में छोड़ा हुआ है वो वहाँ, and then you are actually connected. Yeah. So something like Matrix and something like जो हमने वो surrogates and वो जो चीज़ें हमने movies में देखी हैं वो हमें सच्ची होती नज़र आ रही हैं. So definitely this huge disruption is coming और हर कोई इसको adapt करेगा. और एक बिजनेस मॉडल्स और जितने भी हमारी लिविंग लाइफस्टाइल्स जो हैं वो चेंज होने वाले हैं आगे. सो आई डोंट नो, मे बी कल को हमारे बच्चे जो हैं वो या उनके आगे बच्चों बच्चे शायद वो रही मेटावर्स में रहे वो घरों से कभी निकले नहीं. इफ यू प्रेडिक्ट द फ्यूचर हाउ दे गोना हैपन, और वो एंड मे बी विल बी एबल टू सी आवर एंसेस्टर्स इन द मेटावर्स कि वो फिजिकली
हमारे सामने बैठे हुए हैं, we cannot touch them but we can interact with them. Yeah. So things are changing like anything. और वो सारा डाटा जो इंसान ने ज़िंदगी में अपना गुजारा है, वो सारा डाटा मशीन लर्निंग के थ्रू एक जगह कंबाइन हो रहा होगा और वो एक करेक्टर जो कि रियल नहीं है, ठीक है ना, लेकिन based on that data and machine learning he'll be acting like something real. That's what metaverse and that's what the surrogation disruption is coming up into the future. So जहाँ तक so this was the disruption I touched. And the other thing is that academia and the IT industry, if you see that in the last 6 months the massive growth happened in Pakistan software industry. $2 billion पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने क्रॉस किया है in terms of remittances in last 6 months. This is huge. अगले साल it's going to be more huge. So scarcity of resource is coming up. ये challenges इंडिया को भी फेस आए थे, ये चैलेंज पाकिस्तान को भी फेस आए थे, आने वाले हैं. What they did smartly कि they bridged the gap between industry and academia. So they bridged the differences. People like Dr. Daud, they played the vital role कि यार जो गैप आ रहा है बिटवीन एकेडमिया और इंडस्ट्री उसको जल्द से जल्द ब्रिज किया जाए कि हमें किस किस्म का टैलेंट चाहिए. आफ्टर बेसिक 3 or 4 सेमेस्टर्स जो स्टूडेंट्स हैं दे शुड बी गिवन दोज टास्क जो कि इंडस्ट्री में हो रहे हैं. दे शुड बी वेल अवेयर ऑफ दोज टेक्नोलॉजीज, दोज टूल्स इन दोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि अब इंडस्ट्री में इस वक्त रिक्वायर हो रही हैं. और खाली साहब बात में ये है कि व्हेन वी आर आउटसोर्सिंग, जब आप मैन पावर आउटसोर्स करते हैं, यू आर एक्चुअली सेलिंग मैन आवर्स, ऑब्वियसली वो नो ब्रेनर है. बट दैट एक्चुअली आफ्टर 2 to 3 years दैट बिकम अ ब्रेनर, बिकॉज होता क्या, यू बिकम अ टेक्नोलॉजी पार्टनर फॉर फ्रॉम स्टार्टअप. अगर आप करीम की मिसाल लें, व्हाट हैपेंड कि भी वेंचर टाइप ने भी उसको नो ब्रेनर जस्ट बीइंग आउटसोर्स के टेक्नोलॉजी पार्टनर स्टार्ट किया एंड then they had shares in that, in the whole ecosystem. So वो actually it starts with a no brainer and then become a huge brainer. So हमें उसमें अपने जो एकेडमिया के जो लैब्स हैं, जो एकेडमिया में स्टूडेंट्स हैं, जो करिकुलम है, उसमें डिस्ट्रप्शन लेके आनी है कि भाई व्हाई नॉट अब जितना अपवर्क पे काम पाकिस्तान ने पिछले, जैसे ये ही वाज आस्किंग, भी पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है इस वक्त. इट हैज़ टू बी ऑन सेकंड नंबर, लेकिन तीसरे नंबर पे क्यों है? बांग्लादेश कैसे लीड ले गया? बिकॉज इन कंट्रीज़ में हुआ क्या है कि जितना अपवर्क पे फ्रीलांसिंग में काम है वो स्टूडेंट्स ने उठाना शुरू कर दिया. हमारे स्टूडेंट्स को भी इतनी अवेयरनेस ही नहीं है, और अगर अवेयरनेस है तो वो इतने टेक्स हैवी नहीं है, उनको वो राइट टूल्स टेक्नोलॉजीज नहीं पता कि वो कैसे करके भी उन पर काम करना है. सो दीज आर द थिंग्स आई थिंक एक गैप कवर करना चाहिए ताकि ओवरऑल ग्रोथ आए ओवरऑल इंडस्ट्री में. वी आर राइट नाउ वी आर लुकिंग फॉर ब्लॉकचेन डेवलपर्स जो हमें नहीं मिल रहे हैं, और हमें अपने ट्रेन करने पड़ते हैं. वी हायर फ्रेश टैलेंट, उसको 3 महीने का हम एक कोहोर्ट से गुजारते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, एंड देन दैट टैलेंट इज़ इंडस्ट्री रेडी. फिर वो होता है कि वो बैठ के पहले दिन डिलीवर कर सके किसी क्लाइंट का काम या कंपनी का काम. वाई नॉट कि वो टैलेंट आफ्टर 2 years ऑफ बेसिक एजुकेशन इन द यूनिवर्सिटी ही कैन बी रेडी. इन चीज़ों पर काम करना चाहिए. Right, it's all great to hear industry academia linkages. So what you are telling me is that you are going to sign with me industry advisory board member and you'll make sure that you create time and come over at least once a month. Player. All right, so you'll get the documents very soon from I Sarah. have another question. So what we saying that jobs are getting obsolete of the different fields, like non-techie, fields. Like if somebody is not from the IT domain, but there is a huge number of people working in the organizations or graduating from the universities who are not graduating in the IT field. So what kind of collaborations or what kind of courses industry has to offer? Because ultimately industry also need resources, and how they can convert this non-techie resource pool to get converted into a techie pool. So देखें, कोई भी डिसिप्लिन ख़त्म नहीं होता है, लेकिन वी स्टिल नीड सिविल इंजीनियर्स, बट नाउ वी नीड सिविल इंजीनियर्स दे नो थिंग्स मोर अबाउट IoT एंड हाउ टू बिल्ड मोर स्मार्ट एंड मोर एफिशिएंट buildings, lifestyles and more sustainable structures and models. मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्सोलीट नहीं हो रही है. पीपल थिंक यार अब टेस्ला को मैकेनिकल, दे नीड मैकेनिकल. वन ऑफ माय बैचमेट मैकेनिकल इंजीनियर्स वर्किंग इन टेस्ला राइट नाउ. एवरी कोई चीज़, कोई डिसिप्लिन ऑब्सोलीट नहीं होता है. होता क्या है कि उसमें चेंज आती है. एंड देन वी हैव इवन इन आवर प्रोडक्शन पाइपलाइन, जहाँ हमारी फैक्ट्री के अंदर जोल्टा बाइक्स बन रही हैं, वी हैव मैकेनिकल इंजीनियर्स.
but their flavor is changed a little bit. So what we need to do is कि we need to design those. हम होता क्या है कि बेसिकली कोई भी चीज़ एक चेंज आती है, इवेंचुअली वो पॉपुलर होती है, फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है. अब टाइम थोड़ा कम रह गया. अब होना क्या चाहिए कि बेसिकली अगर वो 4 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है, वो जैसी वो चीज़ इंडस्ट्री में आ गई है, वो यूनिवर्सिटी में अवेयरनेस द नेक्स्ट मंथ आ जानी चाहिए, उस पर काम स्टार्ट हो जाना चाहिए. दैट्स व्हाट वी नीड टू डू. Sarah, the famous saying है, make sure that your date of graduation should not become your date of obsolescence, right? So Rahil is going to join hands with us. Yeah, anyway. Now to Daud, Dr. Daud, you see he has really made a big impact. I'm very happy to know about your interventions. Sarah? So Daud, because you are definitely a young blood, what advice you would like to give to the students of UMT? That in what areas they should focus? And also to UMT as academic center of Yeah. excellence, what do you like to advise us? अच्छा, इसमें अभी जैसे मेटावर्स की बात कर रहे थे, मेटावर्स एक्चुअली वाज इम्प्लीमेंटेड, दैट वाज इन 2017 जब गूगल ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था. मेटावर्स वहाँ से स्टार्ट हो गया. सेकंड, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि जो ग्रेजुएट आईटी इंडस्ट्री के नहीं होते, दे जस्ट हैव टू फोकस ऑन यू हाइव. दैट्स अ न्यू कोर्स फॉर ऑल ऑफ देम इफ़ दे वांट टू टैकल द फ्यूचर. अब हम उनको अमेज़ॉन की साइट पर ले गए हैं, हम अमेज़ॉन सिखा रहे हैं, बट दे डोंट इवन नो हाउ AWS वर्किंग, IoT वर्किंग. जैसे सर राहील इकबाल ने कहा कि IoT इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन. ब्लॉकचेन, अब ब्लॉकचेन, यू हैव बिटकॉइंस एंड द थिंग्स दैट आर कन्वर्टिंग इन मेटावर्स. अब जैसे आप बात कर रहे थे होलोग्राफिक, दैट इज telephoto holographic material that they are going to introduce in metaverse. Metaverse is actually stealing your data. It's actually stealing your data right now using your Google keyboards. आपके Google keyboard से आपका data जा रहा है. You don't even use anything else. They are not capturing your camera. They are not capturing your WhatsApp. They are actually capturing your Google keyboards. आप कीबोर्ड के अलावा कोई चीज़ टाइप नहीं करते. आपका अगर iOS है, आप iCloud के बगैर उसमें लॉगिन नहीं कर सकते. अगर आपका गूगल फ़ोन है तो आपका गूगल अकाउंट होना चाहिए. गूगल असिस्टेंट इज़ नॉट एन AI. इट्स नॉट ट्रेन्ड ऑन AI. इट्स नॉट एन algorithm AI. It's a pre-trained model which adopts your words, your frequency of the words, and then set your data. That's it. iCloud में Siri है. Siri is not an AI. It's giving instruction by you. It's taking instruction by you. Siri है, Cortana है, फिर Alexa. Alexa somehow is an AI algorithm. It converts everything. So metaverse, it's a combination of an Alexa. अब metaverse actually है क्या? It's not about the tech. It's about the digitize everything. They are digitizing everything with the help of blockchain layers, जो blockchain से हम calculate करते हैं, and Ethereum. And besides all of them, they are working on UHive. UHive, a new tech through which you can buy anything through all around the world. So अगर आप UHive किसी को सिखा दें while having in a university, so आने वाले 10 सालों में वो अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर सकता है within Pakistan. Great. I think now we are running short of time. Yeah, so Daud, so I'm gonna take admission in your institute. You have to make sure that you give a good scholarship. I want to learn because I need to qualify. I need to have passport to be in metaverse, right? So it will only come if I have certification from his organization. Great, yeah. Good to hear your So, thoughts and yeah. all the intellectual thoughts and talks. So I guess it puts a huge responsibility on industry and academia to join hands together and to fight the disruptions before we are hit by a quagmire of uncertainties. But it's really important to stay relevant, and that will only happen when we are working together to make a collective measurable impact. Thank you, Raheel, for creating time. Your thoughts were really, really, very insightful, I must say. And we got a lot of new ideas and flavors. Thank you, Dawood. We are so proud of you that you are a UMT graduate representing UMT and creating interventions. So thank you so very much.